Hello students, welcome to my channel. And this video we are going to discuss metals and non-metals. Of course, the properties we have learned, the properties of metal. Now let's start with in periodic table. What you see in periodic table where the metal and non-metal exist, right? The periodic table you are watching is just the earth. So start with the properties. Alkali and alkaline earth metals are what? Here group 1 is the alkali, group 2 is the alkaline earth metals, right? In group 1, how many elements you can see? Hydrogen, lithium, sodium, right? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So these are the group 1 and also called alkali metals. Likewise, alkaline earth metals in group 2, you can see beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These are the on the extreme right side, extreme left, and on the extreme right side you can see the non-metals from group 13 to 18. From group 13 to 18 they are the non-metals. You can see the non-metals are on the extreme right of the table and alkali metals on the left, extreme left of the periodic table. Now being this one, from group 2 to the group 3 to 12, right? You can mention the group. This is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. These from 3 to 12, right? These are the transition metals. These are called transition metals. And why these are called transition metals, we'll discuss it in the chapter periodic classification, right? So these are the transition metals. Okay, so this also known as D block elements, and this one is P block from group 13 to 18, and this one group 1 is S block, and this is called F block, also known as inner transition elements. So this is how the entire periodic table is being explained. So we were concerned with alkaline means basically metals. Okay, let's discuss. The elements on the extreme right are non-metals. They readily accept electrons and are also highly reactive. You will now learn about these properties in detail. If you look around, you will find metallic objects around you in various forms. For example, jewelry made of gold and silver, wires made of copper, and curtain rods made of aluminium are all metallic objects. So these are the physical properties. Metals are used to make these objects because of some specific physical properties. And what Let's take a look at some important physical properties of metals. So we have discussed all metals are solids at room temperature, except mercury, which is a liquid. All metals are lustrous. Metal surfaces shine when they are freshly cut. For example, gold and silver are popularly used for making jewelry because of their luster. Metals have high densities and therefore tend to sink in water. For example, tin and lead sink in water. Exceptions to this rule are lithium, sodium and potassium. The density of these elements is lower than that of water and hence they do not sink. Metals are highly malleable and can be beaten into thin sheets. For example, aluminium and zinc can be rolled into thin sheets. This property makes them suitable for use in various industries like construction and manufacturing. Metals are highly ductile and can be drawn into wires. For example, copper and silver can be drawn into thin wires. See, copper and silver are the good conductor for electricity and current. And rather than copper, silver and gold are very good conducting of electricity and heat. So can we use gold and silver in electrical circuits? Of course you can, but you don't have that much of metal in our surrounding, and also it's very costly.
Okay, so these are some basic physical properties of metals. कंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो, हीट भी कंडक्ट हो। आप किसी भी मेटल को एक तरफ हीट करते हो तो दूसरी तरफ अपने आप गर्म हो जाता है। आप एक तरफ किसी लकड़ी को गर्म करो, कोई वुडन चीज़ हो, दूसरी तरफ गर्म नहीं होता है, मतलब वहाँ पे हीट कंडक्ट नहीं हुआ। करेक्ट। मेटल में देखो, आप कहीं भी मेटल हो, मेटल का एक पार्ट कहीं भी करंट से टच होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से, आप दूसरी तरफ होते हैं, टच हो जाता है, तो आपको एक तरह का शॉक लग सकता है। बट ऐसा वहाँ होता है जहाँ पे कंडक्शन होता है। तो मेटल्स में कंडक्शन है, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जहाँ भी हम कंडक्शन की बात करते हैं मतलब किसी तरह का फ्लो। ओके। Metals are good conductors of heat and electricity. Copper wires are commonly used in electrical cables because of this property. Metals have high melting points. For example, tungsten टंगस्टन इज ए मेटल, इसका सिंबल आप देते हैं W, नोट डाउन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। नेक्स्ट। has a high melting point due to which it is used in bulb filaments. बल्ब के फिलामेंट्स में Mercury इस्तेमाल is an करते हैं। exception to this property since it has a low melting point. Iron rusts because it reacts with moisture to form iron oxide, which is commonly known as rust. Now this is the Metals react with other elements in a variety of ways. Let's look at some such reactions. Formation of ionic compounds. Metals lose electrons to non-metals to form strong ionic compounds. For example, sodium loses electrons to chlorine to form sodium chloride, which is an ionic compound. Action of metals with oxygen. Metals burn in the presence of oxygen to form metal oxides, which are basic in nature. For example, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। आप सपोज करो कैल्शियम है, कैल्शियम को बर्न करो तो क्या बन जाएगा? CaO, राइट? करेक्ट। तो आप उसको बैलेंस भी कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन, अब आप देखो कि ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, लेफ्ट साइड में आपको 2 दिख रहा है, तो आप यहाँ से बैलेंस करोगे ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे, तो बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। इससे आप सोडियम के लिए कर सकते हो। अगर सोडियम बर्न हो जाए, सोडियम बर्निंग हो जाए, कंबस्शन हो जाए, तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न्स, राइट? इट मेक्स Na2O। क्यों? वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएंगे ना। अब देखो सोडियम, अब इस तरफ ऑक्सीजन कितना था? 2, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे। करेक्ट। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो प्रॉपरली। तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है आपको, याद रखें। पहले रिएक्शन लिखते हैं जनरल, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि मेटल को ऑक्सीजन से बर्न किया। ऑक्सीजन देखो, मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड अलॉन्ग विद द वैलेंसी। इसे प्रॉपरली देखेंगे। a magnesium ribbon burns in oxygen to form magnesium oxide. MgO। Action of metal oxides with water. Metal oxides dissolve in water to form basic metal hydroxide solutions. For example, magnesium oxide dissolves in water to form a strong basic solution of magnesium hydroxide. अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया। पहले हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम प्लस O2। अगर हमने आपको कहा कि बर्न मैग्नीशियम, तो सिंबल क्या करोगे? मैग्नीशियम प्लस O2। बर्निंग बताया था, कंबस्शन बोले या बर्निंग बोले। तो बर्निंग जब भी होती है तो विदाउट ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो मेटल को पहले ऑक्सीजन से बर्न किया, यानी रिएक्ट कराया, तो क्या बना? MgO। अब इस MgO में क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, या इस MgO को पानी में हमने पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये वाइट पाउडर क्रिएट हो जाता है ना, MgO। देखा आपने लास्ट हमारे लेक्चर्स में। तो ये जो बनेगा वाटर के प्रेजेंस में, MgOH होल ट्वाइस, ये बैलेंसिंग के हिसाब से लिखा गया है ना, प्रॉपर रिएक्शन है ये। ओके, ये जो हुआ, अब क्योंकि देखो ये एक ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें क्या है, ये हाइड्रोक्सिल है, तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा ना, बेसिक मीडियम, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिप दिखाई गई थी। ओके। As reducing agents. Metals have a tendency to lose electrons. In other words, they are good reducing agents. For example, carbon in the combined form accepts electrons from... देखिए टर्म दिया गया है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं
those that give that what that give hydrogen, or those that cause loosening of electron or gaining of electron? Anyone? Loosening of oxygen and gaining of electron, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का सिंपली मतलब हो, जैसे हम बोलते थे रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होते थे तीन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का गेन होना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। जरा यहाँ पे देखो, अब आप बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बना दे रहा है, ध्यान से देखो, इसने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट, और एक देखो कार्बन को रिड्यूस अलग कर दिया, तो क्या कहोगे, कार्बन से, ठीक है ना, ऑक्सीजन निकली, तो फिलहाल ये कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन निकल गई ना यहाँ से। नाउ दिस वन इज रिड्यूस्ड, क्यों, इसके पास से क्या निकल गया, ऑफ कोर्स इसके पास से ऑक्सीजन निकल गई, तो कार्बन फ्री हो गया ना, ऑक्सीजन निकल गई, तो क्या कहोगे, रिड्यूस हो गया। आगे देखें, sodium and gets reduced to carbon in the free state. फ्री स्टेट, Thus, sodium acts as a reducing agent. और भी होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। Non-metals show properties that are unlike metals. That is, they don't possess metallic properties. Let's look at the common properties of non-metals. Non-metals exist as solids, liquids, and gases. For example, silicon and carbon are solids. Bromine is a liquid. Chlorine, fluorine, and oxygen are gases. Non-metals are non-lustrous. That is, they have a dull appearance. For example, the surfaces of sulfur and phosphorus do not shine. Most non-metals have a very low density. For example, oxygen and nitrogen are lighter than air. The exception is diamond, a form of carbon. Diamond is one of the strongest known substances. This is because carbon, in this form, has a very high density. Non-metals are non-malleable. For example, sulfur and iodine cannot be hammered into sheets. शीट्स भी नहीं बना सकते। Non-metals, except for carbon fibers, are not ductile. For example, phosphorus and bromine cannot be drawn into wires. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. एक्सेप्ट, For example, sulfur and phosphorus cannot conduct electricity. The exception to this property is graphite. ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन के लिए। ओके, तो कार्बन ग्रेफाइट ऐसा होता है, एलोट्रॉप समझते हैं, एलोट्रॉप होते हैं किसी एक एलिमेंट के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उसे बोलते हैं एलोट्रॉप। ओके, एलिमेंट एक ही होता है लेकिन उसके फॉर्म्स अलग टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसके फॉर्म बदल जाते हैं। एलिमेंट एक ही होता है, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है, उसका जो एलिमेंट है वो एक ही जैसा है, यानी प्योरिटी उसकी एक जैसी है, लेकिन उसका कुछ अंदर के कुछ खास कहते हैं ना ग्राफिक्स होते हैं, या फिर क्या कह लें कि आप उसके अंदर के जो खास कॉन्स्टिट्यूशन होता है एलिमेंट्स के बीच, एटम्स के बीच में, उनके बीच के जो गैप्स होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस होते हैं, वो एंगल्स होते हैं एटम से एटम्स के बीच में, वो डिफरेंट हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं, वो एलोट्रॉप्स बन जाते हैं। करेक्ट, लेकिन एटम्स एक ही जैसे होते हैं, उनके बीच के एंगल्स और उनके बीच के डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। ओके, ग्रेफाइट क्योंकि स्लिपरी भी होता है, तो ये एक तरह का कंडक्टिंग नॉन मेटल कहा जाता है ग्रेफाइट। Which is a good conductor of electricity. Non-metals have low melting and boiling points. नॉन मेटल्स में बिल्कुल आप क्या करोगे, मेटल्स का अपोजिट, जो भी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की अपोजिट कर देंगे।